Hello everybody, I am प्रतिभा पुंडलिक, गवर्नमेंट EVPG कॉलेज कोरबा में मैं कार्यरत हूँ। MSc 4th सेमेस्टर ऑपरेशन रिसर्च के क्यूइंग थ्योरी वेटिंग लाइंस के टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने अराइवल्स को डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किस नियम के आधार पर फॉलो किया जाता है। We will consider some distributions which will be using in the queuing theory. The first is exponential distribution. If t is a random variable representing the inter-arrival time, that is the time between two consecutive intervals. Two consecutive intervals मतलब एक के बाद एक दो intervals. Then t obeys an exponential distribution. That is, if we denote function of t is equal to probability density of function t, then ft can be denoted by lambda e raised to minus lambda t, where lambda is a parameter. The regular distribution. Here the inter-arrival time is assumed to be constant. Inter-arrival time मतलब आने का जो समय अंतराल है वो. This distribution is defined by ft is equal to 0 for t less than a and is equal to 1 for t greater than a, where a is a constant quantity. The third one is the Erlang service time distribution. The Erlang service time distribution in k phases, which we denote as ek. The Erlang distribution is very important distribution in the queuing theory. The probability density function for the Erlang distribution is given by f t mu k is equal to mu k raised to power k upon k minus 1 factorial into t raised to k minus 1 e raised to minus k mu t. This can be treated as equation 1, where t is greater than 0, k is greater than 1, and mu and k are positive parameters of the distribution. ये जो exponential distribution हम लोग यहाँ पर लेंगे, this exponential distribution is a special case of the Erlang distribution for k is equal to 1. Now distribution of inter-arrival times. Inter-arrival times मतलब consecutive arrivals में, consecutive arrivals मतलब एक के बाद एक arrival. Let t be the time between two consecutive arrivals. If t is called, it is also called the interval time, अंतराल समय इसको हम कहते हैं. Then the following theorem, पहले हम इसके लिए एक theorem prove करेंगे और उस theorem के applications के आधार पर हम लोग distribution को define करेंगे. The theorem says that if the arrival pattern in a queuing problem follows a Poisson process, then the random variable t representing the inter-arrival time follows the exponential distribution. That is arrival pattern. Arrival pattern मतलब आने का जो system है किसी queuing problem में, वो यदि Poisson के process को follow करता है तो the random variable t जो inter-arrival time को represent कर रहा है वो exponential distribution को follow करेगा. Now if n is the number of arrivals during the time interval of length t, यदि t अंतराल में n arrivals हैं तो arrivals की probability p(n)t will be lambda t raised to power n into e raised to minus lambda t upon n factorial. This is equation 1. Let t0 is the instant of the arrival initially. Which initial condition में हम t0 is the instant of the arrival. The random variable t represents the inter-arrival time. Hence, there is no arrival in the interval t0 to t0 plus t. ये अंतराल है t0 से लेकर t0 plus t तक का, और दूसरा अंतराल है t0 plus t से t0 plus t plus delta t, जहां पर delta t एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है. Therefore, t0 plus t plus delta t will be the instant of consequent arrival.
नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमने ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ली थी PNT, उस इक्वेशन से P0T इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो अराइवल, कोई भी अराइवल नहीं होगा या कोई भी कस्टमर नहीं आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी डिटरमिन की जाती है P0T से. That gives lambda t raised to power 0 into e raised to minus lambda t upon 0 factorial, and that is equal to e raised to minus lambda t. So P0t is equal to e raised to minus lambda t. इसको हम ले लेंगे equation 2. And P0t plus delta t is the probability of no arrival in time t plus delta t. T plus delta t समय में कोई भी अराइवल नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी डिटरमिन की जाती है जस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग t plus delta t in place of t. So you have lambda t plus delta t raised to power 0 into e raised to minus lambda t plus lambda t upon 0 factorial. That gives you e raised to minus lambda t plus delta t. Is e raised to माइनस लैम्डा t प्लस डेल्टा t को हम लोग ब्रेकअप करके लिख सकते हैं e रेज टू माइनस लैम्डा t इंटू e रेज टू माइनस लैम्डा डेल्टा t. और e रेज टू माइनस t वैल्यू थी P0t की, इसलिए यहाँ पर P0t और इसको एक्सपैंड करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा डेल्टा t प्लस 0 डेल्टा t होल स्क्वायर एंड सो ऑन. आगे के जितने भी टर्म्स हैं वो सेकंड और हायर पावर्स ऑफ डेल्टा t को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं. एंड p t plus delta t minus this will be p0 t plus delta t minus p0 t. Changing the sides, you have lambda p0 t delta t plus 0 delta t square, or P0 t plus delta t minus P0 t upon delta t will be minus lambda P0 t plus 0 delta t whole square upon delta t. Taking the limits as delta t tends to 0, we have d by dt. ये quantity हमारी d by dt में convert हो जाती है. d by dt P0 t is equal to minus lambda P0 t, and this 0 डेल्टा टी होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी, इस क्वांटिटी को हम लोग छोड़ देते हैं. वी लीव द नेगेटिव साइन and also we are leaving the negative sign as probability density function is always non-negative, and this delta t being a very small quantity can be neglected. So we have d by dt upon of P0t is equal to ft, which is written as ft, and this is equal to lambda e raised to minus lambda t from equation number 2. This is called the probability density function of t. Similarly, we can show that if the time t to complete service on a unit follows the exponential distribution, that is ft, the density function of t is mu e raised to minus mu t. Lambda represents the arrival and mu represents the distribution. काउंटर से सर्विस आपको किस प्रकार की मिल रही है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. तो यदि टाइम t to complete service on a unit, एक किसी यूनिट पर, if it follows the exponential distribution, that is ft, the density function of t is equal to mu e raised to minus mu t, where mu is the mean servicing rate for a particular servicing station, then n, the number of units the servicing station could serve in time t. उस सर्विसिंग स्टेशन के द्वारा किसी अंतराल t में n नंबर्स को सर्व किया जा सकता है. If the servicing is going on throughout t, will follow the Poisson distribution. यदि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर अराइवल्स हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी के बेसिस पर होगा, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं phi फंक्शन से. phi t of n, that is the probability of n distribution. phi t या n servicing, phi t n is equal to mu t raised to power n e raised to minus mu t upon n factorial. That is the probability of n servicing in time t
if there were no enforced idle time. No enforced idle time मतलब हर चीज स्मूथली चल रहा है, स्टेडी स्टेट में चल रहा है, कोई अलग से खाली समय या एक्सप्लोसिव स्टेट अकर नहीं हुआ है, और इस समय distribution will follow the Poisson distribution. Hence we can have the following deductions. हम इसमें से कुछ postulates या कुछ deductions लेते हैं. That phi of delta t 0 is the probability of no service in time delta t. No service in time delta t, और इसको represent करेंगे 1 minus mu delta t से. Phi t1 is equal to probability of one service in time delta t, that is mu delta t, and phi of delta t m, that is probability of more than one service in time delta t, is equal to 0 where m is equal to greater than 1. क्यूइंग मॉडल्स को पढ़ने के लिए हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के क्यूइंग मॉडल्स हैं, और उन क्यूइंग मॉडल्स को पढ़ने से पहले हमको कुछ नोटेशंस को देखना होगा, कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा, कुछ इक्वेशंस को डिराइव करना होगा, then only we will be able to study the queuing models. So for that we need some basic notations, और ये notations हम लोग उसमें यूज करेंगे. T is the inter-arrival time between two successive customers. N is the number of customers in the queuing system. Queuing system में कितने arrivals हैं, वो N के द्वारा denote किए जाएंगे. P and T will be the probability that there are exactly n units in the system at any time t. Transient state मतलब शुरुआत की अवस्था में P and T is the probability that there are exactly n units in the system at any time t. Pn is the probability of having n units in the system. पूरे system में n units है, that is limit t tending to infinity. Pnt is equal to Pn, और इस state को हम steady state कहते हैं. Lambda n, mean arrival rate of customers when there are n units present in the system. Mu n, mean service rate when there are n units in the system. Lambda will be the mean arrival rate of customer independent of n. Mean arrival rate of customer is denoted by lambda. And mu is the mean service rate, which is again independent of n. S is the number of parallel service stations. Parallel service stations मतलब कितने counters हैं. Lambda is equal, rho is equal to lambda by mu, that is the traffic intensity. 0 delta t, a quantity which is of smaller order of magnitude than delta t. Psi omega, that is the probability density function of waiting time in the system. ELS का मतलब है expected number of customers in the system. Waiting में भी और service में भी इसको include करके, that is expected और mean line length. कितनी लंबी line है, कितने customers उसमें expected है, ये दर्शाता है ELS. ELQ मतलब queue में कितने लोग खड़े हैं, expected number of customers in the queue, that is expected or mean queue length and excluding the number of units in the service. जो service counter में खड़ा है उसको छोड़कर जो बाकी का queue है उसको हम लोग लिखते हैं ELQ से. EWS is the expected waiting time per customer. प्रत्येक कस्टमर को कितना समय लगता है इंक्लूडिंग दी सर्विस टाइम को इंक्लूड करते हुए. WQ मतलब एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम पर कस्टमर इन द क्यू में कितने लोग खड़े हैं, कितना समय उनको लगेगा अपनी सर्विस का इंतजार करते हुए, जिसमें हम एक्सक्लूडिंग द सर्विस टाइम को छोड़कर उनको कितना समय लगेगा क्यू में उनको खड़े रहने के लिए. ELL greater than 0, that is the length of the non-empty queue. यदि queue हमारा length queue यदि हमारा non-empty है, उसमें कुछ customers खड़े हैं, तो expected length of the non-empty queue. EWW, that is the expected waiting time of a customer who has to wait. Customer को कितना समय लगेगा अपनी सर्विस का इंतजार करने में, वो कहलाता है EWW से.
Now the value rho is equal to lambda by mu must always be less than 1. So the steady state, so that the steady state condition may be obtained. When rho की value lambda upon mu 1 से कम होती है, तभी condition steady state condition कहलाती है. And if rho is greater than 1, then extremely large Qs will be obtained. यदि lambda का मान mu से बड़ा है, तो बहुत बड़ा Q या बहुत बड़ी waiting line वहां पर हमको मिलेगी. Before studying the queuing models, हमारे syllabus में 3 queuing models हैं और उनको हम classify करते हैं. क्लासिफिकेशन के लिए एक सिस्टम है या उसको किस तरह से क्यूइंग मॉडल को हम रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय दीज 5 पैरामीटर्स A, B, C, D, E और उसको लिखने के लिए इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है. A/B/C:D/E. Now what is A, B, C, D and E? A is the arrival pattern of the unit. Arrival pattern मतलब customers किस system से आ रहे हैं. That is the Poisson distribution. B is the probability of distribution of servicing. Service pattern क्या है? हमारा generally exponential pattern होता है, तो probability of distribution of servicing. The arrival pattern also follows the Poisson distribution, and B, the probability of distribution, this follows the exponential distribution. C is the number of servicing channels in the system. C के स्थान पर यदि 1 लिखा है मतलब एक काउंटर है, 2 लिखा है यानी 2 काउंटर्स हैं, 3 लिखा है तो 3 काउंटर्स हैं. C is the number of servicing channels in the system. D is the capacity of the system. Capacity of the system मतलब maximum number allowed in the system. उस सिस्टम में हम कितने लोगों को अलाउ कर सकते हैं इन सर्विस एंड इन वेटिंग, दोनों को मिलाकर. यदि D का मान n लिखा है मतलब n लोगों को ही हम उसमें अलाउ करेंगे. D का मान यदि इंफिनिटी लिखा है, इसका मतलब हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पर्संस को वो सिस्टम उसकी कैपेसिटी इंफिनिटी है. And E is the manner in which units are selected for service in the system. The manner in which units are selected for service in the system, that is the service discipline. Service discipline मतलब FIFO या FCFS से भी हम उसको डिनोट करते हैं. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, ये मैनर है. SIRO एक मॉडल है हमारा, that is service in random order. This is the manner in which the units are selected for service in the system or the service discipline. Now the various types of queuing models we will be discussing in the next lecture. And before moving to the next lecture, I would request all students to please refer to your textbooks, your reference books और जितने भी notations और जितने भी derivations हम लोगों ने आज देखे हैं, उनको pen and paper के माध्यम से आप उसको अपने book से refer करते हुए पढ़ें, ताकि next time जब हम queuing models को study करेंगे, you will be able to understand what type of a queuing model we are going to study. So we have so far discussed Poisson arrivals and Poisson distributions and the notations which we were using for determining some conditions and the queuing model discipline ABCDE, that is the pattern of the queuing model. So in the next lecture, we will be discussing the queuing models. Thank you.